And West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is currently addressing the media after meeting the clerics. Take a look. স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে The West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee addressing after meeting the clerics. তার মানে আজকে কনস্টিটিউশনটাকে যারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছেন তারা কি তপশিলি আমার নেতা শুধু আমরা বলি না, আমরা বলি দেশের নেতা আম্বেদকরজিকে। আমি গর্বিত তিনি বাংলা বিধানসভা থেকে প্রথম নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন সংসদে, অনেকে জানেন না। এবং তিনি যে সংবিধান তৈরি করেছিলেন অন্যান্যদের নিয়ে, সেই সংবিধানটাকে বিজেপির সংবিধান তো বলা যায় না, ভারতবর্ষের সংবিধান বলা হয়, ইন্ডিয়ার সংবিধান বলা হয়। তো আপনারা ক্ষমতায় এসে এই 10 বছর ধরে কি করছেন বলুন? কটা ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন বলুন? দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে ওষুধের দাম, मेडिसिन का भाव आप 100% बढ़ा दिया, प्राइस राइज बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके meeting Imam from Bengal, and essentially her address is of course about the entire row over the Waqf Act. पीछा से नहीं करते हैं, छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। और गदी मीडिया को, हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। शर्म होना चाहिए। क्या सोचता है? আমি আপনাদের বলবো, ইমাম সাহেবরা, আপনাদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, পুরোহিতদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি, আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি। Mamata Banerjee there essentially saying that she has a lot of respect for the Muslim clerics as well as priests, in a way trying to portray herself as a secular leader, and also naming a lot of Bengal icons, and essentially saying that she believes in a religious harmony and she does not want any sort of unrest. যদি আপনাদের একটু বিশ্বাস থাকে, যদি একটু ভরসা থাকে, अगर आपको कोई विश्वास मुझ पे है, मैं हर धर्म का बात करते हैं। जब आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तो अब बीजेपी कहा जाता है, जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। Mamata Banerjee also essentially saying that she respects all religions and she speaks for the good for all religions. हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। वो कौन थे जो आजादी का लड़ाई किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज तक किसी को पता नहीं हुआ उसका कहा हुआ, क्या हुआ। दुख का बात है, शर्म का बात है, जिनका राइट हैंड सानाज खान था। गांधी जी ने
जब लड़ाई किया था, जब फ्रीडम एट मिडनाइट हो रहा था दिल्ली में, तो गांधी जी ने खुद बेलेघाटा में गांधी भवन में कलकत्ता में बैठे रहे, जैसे कोई कम्युनल राइट्स ना हो, सब शांति से रहे। वो लोग कौन थे? जब देश में आजादी का लड़ाई हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना गाया। जब देश को टुकड़ा करने चाहा बांग्ला को, कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पूर्ण हो खे भगवान। और इकबाल ने कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर धर्म का आदमी, हर परंपरा का आदमी देश में आजादी का लड़ाई लड़े, और देश में डेवलपमेंट का उसका भी हिस्सा है। वो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो कौन थे? एपीजे कलाम। वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। वो कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बात सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान 26 धाराয় যে কোনো ধর্মের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং সেই উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেয়া হয়েছে। আপনি আমার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, আপনি রাম রহিম সবারই অধিকার কাটছেন। এটা কি আপনার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে? Actually saying that because of the amended Waqf Act, rights of minorities are being taken away, and that is something for which the central government is responsible. আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? বেঙ্গল ইজ দ্য বর্ডার অফ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা। আপনি ইউনুসের সাথে গোপন মিটিং করুন, চুক্তি করুন, দেশের ভালো হলে খুশি হব। কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কি? আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? কোন এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई भेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम गरीब में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है। पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है।
मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद कालिदासेर मतो जे गाছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, किच्छु करार नहीं। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको तो अपना के तो हामागुड़ी दीते होबे। सबचेয়ে देशेर क्षति करेছেন আপনি। मोदी जी के आमी रिक्वेस्ट करब, दया करे लोकटाके कंट्रोल करुन। समस्त एजेंसी के दिए दिएছেন ওনার হাতে। There you heard it, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee upping the ante against centre, saying that if Bangladeshis are involved, then the onus lies on the BSF. The centre should call for an explanation from them. We have BJP's Shatrupa also joining us for a quick reaction. Ms. Shatrupa, what do you have to say about West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee questioning the role of BSF? Good afternoon. I am completely confused. I've been watching her lecture, so to say. She started off in some manner and now she's gone off somewhere else. But if you noticed, her entire demeanor all through is one of appeasement, number one. Number two is she is again trying to divert the attention by once again blaming the BSF, and as usual right now she's blaming the Home Minister himself. The point is, the law and order of any state is a state responsibility. She is the head of the state. If she is meeting the ulemas or the Islamic leaders, the least she could have done is appeal to these people that please tell your brethren not to initiate any kind of violence. She is nowhere near that. She is, as usual, blaming everyone else except herself and her basic, irresponsibility of being able to handle the law and order of the state. Again, I want to reiterate on your channel live that it is Mamata Banerjee who is singularly responsible. That is why she's trying to deflect attention to the central government or any other. She's trying to put the blame on everybody else. But it is her, only her, and her appeasement politics. She's the one who has ignited this fire, and there's absolutely no attempt from her side to even let things subside. But, ma'am, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is saying that by passing the Waqf Act, the rights of minorities have been put into danger. There is a saying in Bengali called Olpo Bidde Bhayankari, which means if you have half the knowledge of something or half the comprehension of something, and then you decide to talk on that, then you yourself become a disaster. This is exactly what Mamata Banerjee is doing. I would request you, and maybe have a show on the Waqf bill, and we can explain. We, in the sense that Waqf bill is there for everyone to see. If somebody takes the patience to go through it, it is against no community. Number one. Number two, it is a bill which has been discussed in the Lok Sabha for 2.5 days, 2 days in Rajya Sabha, signed by the President of India. It is now a law. You are free, anybody is free to appeal to the Supreme Court of India on any one clause or two clauses of parts of the law. There is no justification in creating this kind of unabated violence in any state on one particular community. Having said that, once again I want to clarify in one sentence, this is an all-inclusive bill which is now a law, which is called Umeed, which is hope. It talks about, if you and I want to go and purchase a property, we would normally have to go through a searching of the property, then we go through a registration. Government of India wants to do the same thing. We want to register all the Waqf property. And here is the basic catch in West Bengal. Most of the Waqf property that the Islamists claim are properties like Eden Garden, properties like Victoria Memorial, Nabanno itself, and most importantly, many of the properties are listed in these Muslim ministers of the West Bengal government. That is where the problem is. I don't want to mince words.
That is exactly the problem. That is why Mamata Banerjee has instigated one community against another, and now she is standing on raging fire in West Bengal, and she wants Ms. to Chatrupa, get more the West Bengal Chief Minister has also put up a big charge that West Bengal BJP is misleading people, is sharing fake news, doctored videos on social media. No, that is absolutely not true. That is absolutely not true. Mamata Banerjee for the last 15 years has spent most of her speeches, whether it is in her internal organization, whether it is on public stage, accusing the BJP. Now that hardly matters because BJP is the single largest opposition in West Bengal. If she wants to include our policies in her speeches, that is entirely her problem. But once again, I am telling you, it is Mamata Banerjee, her comments and her complete abeyance, agreement and what should I say, silent support, often vocal support to her Muslim ministers when they go around saying that they will be thinking Hindus in the Bhagirathi, or when her Muslim minister Firhad Hakim says that it is a sin not to be born a Muslim. And this same Firhad Hakim has said everything is hunky-dory in West Bengal. Okay. That is where we want to blame Mamata Banerjee, and we are doing that squarely and singularly. It is Mamata Banerjee's fault that West Bengal is on fire. Okay, point today. taken, Ms. Chatrupa. Thank you so much for joining us for a quick reaction. There goes the BJP. The political blame game continues. My colleague Shreyoshi is also joining me from Kolkata. Shreyoshi, the blame game clearly continues while innocent pay the price of violence and riots. We'll try and reconnect with my colleague Shreyoshi on this story. Shreyoshi, if you can hear me, the political blame game, we heard the West Bengal Chief Minister blaming the BJP is blaming West Bengal Chief Minister, both saying the other is responsible for what's happening in West Bengal, the riots, we saw the violence, how the pictures were telling 1,000 words, vehicles torched, there was arson, but nobody wants to take the responsibility so far. We seem to be having some trouble while connecting to my colleague Shreyoshi, but viewers, till that time, listen to what exactly West Bengal Chief Minister had to say about the Waqf Act. कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते आपको 2/3 मेजॉरिटी का जरूरत था, এটা আপনারা করেননি। যাই হোক, যা ওদের আছে তো আছে, যা করেছে আমরা তো সমর্থন করিওনি আর করবও না, কিন্তু আপনাদের কাছে আমার হাত জোড় করে অনুরোধ থাকবে, আপনারা এলাকায় শান্তি রক্ষা করুন। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है, उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है, आप लोगों ने ज्वाइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए, चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है। अरे रुपया तो इंसान क्यों जन्म लेता है? आज है तो कल नहीं है। हम जब जन्म लेता है खाली आता है, खाली हाथ में, आज जब चला जाता है तब भी खाली हाथ में चला जाता है। तो इतना लोभ करने का जरूरत क्या है? आप क्यों रोजा मनाते हैं? अल्लाह ताला के पास आप दुआ मांगते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए, सबको लिए, विश्व शांति के लिए। तो आप हमको बोलिए, आपको अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया, लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है? बाहर में मत करिए,
बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। अगर ये विश्वास, एक भरोसा आपका है तो मेहरबानी करके, मैंने भांगुर में भी देखा, इसका बाद क्या जरूरत है। हम देखते हैं जब कोई ऐसा इशू होता है, कोई अपन आइडेंटिटी के लिए निजेर आइडेंटिटी बाड़ाबार जन्य पॉलिटिकली एटाके मिसयूज करे। आई डोंट लाइक दैट। अगर हमारा भी कोई करे तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। हमें नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इमाम लोग आप मस्जिद से प्यार से बताइए। And that's the West Bengal Chief Minister upping the ante against the centre, blaming them for division in the society, saying that till the time the TMC is there, there will be no Hindu-Muslim in the society. My colleague Shreyoshi is joining me back on the broadcast. Shreyoshi, the political blame game continues. We heard the BJP also blaming Mamata Banerjee and her Sarkar, while Mamata Banerjee continues to pinpoint that it is the centre and the BJP who are responsible for creating unrest in West Bengal. Well, Chief Minister Mamata Banerjee has shifted the entire blame for the violence in Murshidabad on the central leadership in New Delhi, saying that the BJP-led NDA government passed this bill in a hurry and has not been able to put across to the people what this bill means, and that has triggered the violence in Murshidabad. Despite the fact that law and order comes under the state ambit, Chief Minister Mamata Banerjee is addressing a clerics association here. Stating how they have provoked these tensions and they have been attempting... Stating how they have provoked these tensions and they have been attempting to do that since Ram Navami. Remember, the Trinamool Congress has been on a political back foot since what happened in Murshidabad. 3 lives were lost in Jangipur and parts of Dhulyan, where violence withdrew on Friday and Saturday. Arrests are being made. The ground situation is under control, but the tension remains. Mamata Banerjee is strategically pushing that blame on the centre for the Waqf law that has been passed by the parliament. She is also driving in the point that her MPs in the parliament has opposed it, trying to make her stand clear to the minority community here in West Bengal, because we have seen widespread violence. She has also blamed, without naming the Indian Secular Front, about the Bhangur violence that we reported just day before yesterday. She's saying that amidst such violence, certain political leaders are trying to up their, political image in the state by, fishing in these violent waters. And that is exactly what she is saying for Nausad Siddiqui, the lone ISF MLA from the minority community and ISF. But the people here who have gathered, Chief Minister Mamata Banerjee is appealing them to be peaceful, to stay calm, and has also urged them not to pay any attention to any BJP provocation, because what is happening right now is the BJP and the Trinamool Congress exchanging barbs over the violence that led to Murshidabad. On one hand, the BJP is saying that Mamata has lost control of the ground situation, especially the law and order here in the state. And the Trinamool Congress, which has been cornered by the opposition parties, is now saying that it was the centre's fault due to which there was violence in Murshidabad because of this law. And tomorrow the matter comes up before the Calcutta High Court, and the BJP will be looking at an NIA investigation into what happened in Murshidabad, and also Central Post stay extension in the riot-hit areas of Murshidabad. Now, Chief Minister Mamata Banerjee is also blaming the BSF for not guarding the international border, saying that outsiders are coming into West Bengal. The borders are not secured enough, and because Murshidabad, Malda, Nadia, these districts where violence has been reported, also share their boundary with Bangladesh. So Chief Minister Mamata Banerjee, who has been taking review reports from the police on what is the situation in ground,
is, pointing fingers at the BJP for provoking these violent riots in Bengal. And of course, this message she's asking the clerics to carry forward to their districts, and has also vowed that till the time she's in power over here, there will be no division between Hindus and Muslims. And she's reiterated that she will not allow this new law to be implemented here in West Bengal. Actually, when Mamata Banerjee was speaking, she was highlighting the point that some people in West Bengal are sharing fake videos. Can you take us through that incident? Which leader is the TMC pointing at? Because we took the reaction from the BJP as well, and they say that no such video has been shared so far in respect to what happened in Murshidabad and other districts during the Waqf protests. Well, in the backdrop of the Murshidabad violence, the BJP, from its social media handle here in West Bengal, the state BJP official handle did share pictures of riot-hit, areas. But the Kolkata police, the West Bengal police, then responded to that social media post and said that it was fake. These visuals are not from West Bengal, but also pointed out where exactly those visuals were from. They were mostly from anti-CAA protests in Uttar Pradesh and other northern regions of the country, and they were old dated footages. So the police keeping a strict vigil also online. ADG South Bengal Supratim Sarkar has said that over 1,093 social media handles have been blocked for spreading misinformation and videos that are not related to Bengal violence. Internet remains suspended in Murshidabad. That internet suspension has been extended to parts of Birbhum and Malda, which share their boundaries with Murshidabad as well. So the Chief Minister keeping a tight vigil online as well. For this, the cybercrime, CID, STF and Bengal police have coordinated and keeping a close watch on what is being said on social media. And even right now, while speaking, Mamata Banerjee has not minced her word, putting the blame and onus on the BJP, saying that they are provoking. Right, Shreyashi, hold your thoughts.